Hare Krishna. We'll begin the session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय हरे कृष्णा. So welcome to all of you. We are going to begin the next chapter today, chapter 13. 13वें अध्याय का प्रारंभ आज हम करने वाले हैं. तो from the 13th chapter, Krishna starts speaking about ज्ञाना. तो 13वें अध्याय से नॉलेज के बारे में कृष्णा बताते जाएंगे. How devotion can be accrued or acquired through the process of jnana. Although Krishna recommends that we directly come to the process of bhakti by the medium of instructions of Guru, Gauranga and Shastra, Sadhu and Krishna. So, तो भगवद गीता में हालांकि भगवान श्री कृष्णा सीधे सीधे भक्ति योगा पे आने के लिए सूचित करते हैं. श्रील प्रभुपाद भी बार बार भक्ति योगा के बारे में ही बात करते हैं और डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस के बारे में बात करते हैं. लेकिन भगवद गीता, how it has been structured? The first 6 chapters, chapter 1 to 6, Krishna deals with karma yoga. And this karma yoga, it's not karma, it is karma yoga. तो पहले 6 अध्याय में कृष्णा कर्म योग के बारे में बात कर रहे हैं. कर्म करते हुए कैसे भक्ति हम पा सकते हैं. How we can get devotion and how we can render devotion through the process of activities. And when we dovetail the activities to Krishna in a prescribed manner, that is called as karma yoga. So simply working is called karma and it has got its reactions. केवल काम करेंगे, कार्य करेंगे, उसको कर्मा बोलते हैं और उसके साथ रिएक्शंस भी आएगा. लेकिन जब कर्म को मार्गदर्शन से by the guidance of devotees, Guru, when we dovetail our engagements in the service of Krishna, we're actually doing devotional service. So first he speaks about how devotion, because majority of the people in the world are doing some activity. Almost everybody is doing some activity. So Krishna is first teaching how we can continue to do those activities, dovetail those activities and Krishnize our activity, spiritualize our activity. कैसे हम हमारे दैननित्य कार्य को भक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं. फिर आखिरी 6 चैप्टर्स अभी से 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक, बल्कि 17वें अध्याय तक, including 18 for most part of it, Krishna talks about ज्ञान. कैसे ज्ञान को पाते हुए ज्ञान के माध्यम से कैसे हम भक्ति में आ सकते हैं. How through the process of divine knowledge, not any knowledge, not mundane knowledge, divine knowledge, how we can progressively come to devotional service. But the best of the advices, the most secret advice, guhyatamam,
The topmost secret of bhakti is given in the chapters of bhakti, where Krishna from chapter 6 and onwards, that is starting from chapter 7 to chapter 12, talks about direct devotional service. तो सीधा सीधा भक्ति के बारे में कृष्णा बात करते हैं। और 12वें अध्याय तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिवोशनल सर्विस, तो भक्तिमय सेवा। So the best of it, the cream of it, the most valuable of it, the most precious knowledge is kept in between 6 chapters, the middle 6 chapters, and it is covered, protected by the first 6 chapters and the last 6 chapters. जैसे कि हम कोई कीमती वस्तु को एक बक्से में छिपाते हैं, रखते हैं, ऊपर का एक लिड होता है, नीचे का एक बॉक्स होता है, तो बीच में हम वो वस्तु को रखते हैं। So similarly, these 6 chapters that we studied till now, the Bhakti Yoga chapters, forms the core, the crux, the actual part of essence of Bhagavad Gita. Although, right from Shloka 1 to the last Shloka, all the shlokas are important and they constitute the Bhagavad Gita as a whole, including Dhritarashtra Uvacha, Sanjaya Uvacha, Arjuna Uvacha. 575 shlokas out of 700 spoken by Krishna, remaining spoken by Sanjaya, Arjuna, Dhritarashtra, Duryodhana indirectly. But all these together constitute Bhagavad Gita. So having talked about Bhakti Yoga, having learned the best part of Bhagavad Gita, why then we have to study Jnana Yoga? We have to study Jnana Yoga because Jnana also will lead us to Bhakti. And Krishna and Prabhupada is given as a multifaceted program where acquiring knowledge is also a part of our sadhana. Because we are not perfect. क्योंकि हम अभी परिपूर्ण नहीं है, तो हमें ज्ञान का सहारा भी लेना है, लेकिन ज्ञान को मार्गदर्शन से भक्तिमय करना है, कार्यों को हम मार्गदर्शन से भक्तिमय करना है, एंड फाइनली भक्ति सेवा भी हमें करना है। जैसे कि many of you are working outside, so it is not necessary that you give up these things. So while you are working, how to dovetail and come to bhakti, and how to also render direct devotional service. And now why Prabhupada, now we are going to understand why Prabhupada insists read Bhagavatam, read Bhagavad Gita, because that is also a process of bhakti. When we read transcendental literature and acquire knowledge, that is also a process of bhakti. So from chapter 13, we now enter Jnana section, and therefore the last 6 chapters covers Jnana Yoga. आखिरी जो 6 अध्याय हम अभी पढ़ने वाले हैं, हमने पहले 6 अध्याय एक साल में कंप्लीट किया डिटेलली, almost 55 sessions, more than that, I think about 70 sessions we took, including the reviews, overviews. फिर हमने next 6 chapters किया. So totally we have completed 180. Today is the 184th session, and we have completed 12 chapters. So we took 2 years to complete 12 chapters, very much in detail. बहुत ही मतलब तीव्र रूप से deeply we have studied. So the next 1 year we are going to study the last 6 chapters of Bhagavad Gita, because we are doing only 1 or 2 sessions per week. So the last 6 chapters, Krishna talks about how to achieve bhakti through knowledge. ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से कैसे हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं. So it shows us, Krishna shows us how to utilize knowledge as a means to attain devotion. कैसे ज्ञान कहाँ से? भगवत गीता से, भागवतम से, चैतन्य चरितामृता से, हमारे गुरु से जो भी लिखा गया पुस्तकों से हम ज्ञान के द्वारा
भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, along with doing practical devotional service. Like Kartik month is coming up, plethora of services available, बहुत सारे services lined up है. You're all supposed to be geared up and be prepared to render lot of services. So, but without a touch of bhakti, केवल कार्य करेंगे लेकिन उसमें भक्ति का टच नहीं है, तो क्षमा ये वही केवलम न उत्पादयेद यति रति. अगर कार्य करते करते कृष्ण के प्रति हमें रति, अट्रैक्शन हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा है, तो वो श्रमा ये वही केवलम, इट्स ए यूजलेस एक्टिविटी. और ज्ञान भी, अगर ज्ञान में भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान भी इट इज वेस्टेड टाइम ऑफ इन एजुकेशन. सो कब विद्या यूजलेस हो जाता है? जब विद्या हमें कृष्णा की ओर नहीं लेके जाता है. ऐसे विद्या कूड़ के समान है, इट इज गार्बेज. सो दैट विद्या दैट टेक्स अस टुवर्ड्स कृष्णा, that it constitutes the jnana yoga, and it actually, when it's done in full devotion, it is converted into bhakti yoga. Reading also can become complete bhakti yoga. So without the touch of bhakti, both karma and jnana are useless. ज्ञान और कर्म मतलब बेकार हो जाता है. So this 13th chapter, how is it divided? ये 13वें अध्याय 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम. It's divided into 5 parts. There are 35 shlokas in the 13th chapter. 35 श्लोका है और इस अध्याय का नाम है नेचर एंजॉयर कॉन्शियसनेस. प्रकृति, भोक्ता और प्रज्ञा. So this is the title of the chapter. So now it is going to become a little bit analytical. 13th chapter, 14th chapter, it's going to be a lot of analysis. 15th chapter talks about Purushottama, Lord himself, Purushottama Yoga. And then 16th chapter, again, little bit of analysis. 17th chapter, little bit of analysis. And 18th chapter becomes the summary of Bhagavad Gita. Second chapter is also summary of Bhagavad Gita. The synopsis of Bhagavad Gita. Can say it's a preview of Bhagavad Gita. And 18th chapter is the review of Bhagavad Gita. और बीच-बीच में हम overview of Bhagavad Gita कर ही रहे. Today is the 13th overview. 13th chapter है, so 13th chapter का overview. So section 1, पहला जो section है, it consists of 7 shlokas, 13.1 to 13.7. So what is covered in these 7 shlokas? Arjuna's 6 questions. तो इस 7 श्लोक में क्या ज्ञान कृष्णा दे रहे हैं हमें? यहाँ अर्जुना 6 प्रश्न पूछते हैं कृष्णा में, और कृष्णा उन 6 प्रश्नों का समाधान करते हुए प्रारंभ करते हैं इस पहले 7 श्लोक में. In fact, in the first 7 shlokas, Krishna talks about solution for the question number 3, question number 4, and question number 5. He first begins giving answer to question number 3, 4, and 5. Then he explains the field of activities and who is the knower of field. मतलब कार्य का जो खेती क्या है, कार्य का खेत क्या है और खेती करने वाला कौन है. सेकेंड सेक्शन श्लोका नंबर 8 टू श्लोका नंबर 12, सिर्फ 5 श्लोक है इसमें. तो कृष्णा एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड लिबरेशन. कृष्णा इस सेक्शन में ज्ञान और मुक्ति के बारे में विस्तार से बताते हैं. इन द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 3, तीसरे सेक्शन में जो 13वें श्लोका से 19वें श्लोका तक जाता है, that is 13th श्लोका to 19th श्लोका, कृष्णा एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. सारे ज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, ज्ञान का मकसद क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, किसके बारे में हमें ज्ञान चाहिए, व्हाट शुड, विषय वस्तु क्या होना चाहिए ज्ञान का. ये कृष्णा विस्तार से बताते हैं और प्रभुपाद जी अपने पर्पस में
बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इन द फोर्थ सेक्शन which starts with shloka number 20 and with shloka number 26. So 20वें श्लोका से 26वें श्लोका तक कृष्ण एक्सप्लेन्स प्रकृति, पुरुषा एंड देयर यूनियन। तो प्रकृति के बारे में, पुरुषा कौन है इसके बारे में, और उन दोनों के समागम के बारे में कृष्ण बात करते हैं। तो श्लोका नंबर 8 to 12 Krishna talks about, he further elaborates क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, उसका उत्तर देते जाएंगे। और तीसरे सेक्शन में कृष्णा स्टार्ट्स गिविंग द आंसर फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन, अर्जुना के छठे क्वेश्चन का आंसर देते। फिर फोर्थ सेक्शन में पहले और दूसरे सवाल का वो जवाब देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस आर आंसर्ड। सो कृष्णा भी कहीं बीच में आंसर स्टार्ट कर दिया और पहले दो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने लास्ट दे दी। तो कृष्णा टेढ़ा है तो उनका तरीके भी टेढ़ा है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉजिकल रीजन व्हाई कृष्णा टेक्स अप थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, then comes to first and second, and we will know as the chapter progresses why Krishna took that. And in the fifth section, which starts from shloka number 27, and how many shlokas are there in this chapter? There are 35 shlokas. So 27वें श्लोका से 35वें श्लोका तक, end of the chapter, Krishna talks about Jnana Chakshu. So how through the vision of knowledge we can understand devotion, how we can look at the world with the vision of transcendental knowledge. So this section can be called as vision of knowledge, Jnana Chakshu. Krishna is also Krishna is also telling many times in Shastra also it is mentioned, Prabhupada also बहुत बार बोलते हैं कि हमें इस दुनिया को कैसे देखना है, ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान के चक्षु से, चरम चक्षु से हम केवल भौतिक दृष्टि से इस जगत को देखेंगे। We will only see this world in a materialistic way with this material eyes. But when we gain the vision through the medium of knowledge, जब ज्ञान चक्षु का चश्मा पहन के हम इस दुनिया को देखेंगे और अपने भीतर में हम देखेंगे, तो हमें सुज्ञान मिलेगा और भक्ति के ओर हम बहुत ही आसानी से प्रगति कर सकते हैं। So these are the 5 sections of this chapter. So in this section, I already explained how Krishna puts himself as Bhagwan and as the super soul. कैसे वो परमात्मा है और कैसे परमात्मा कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में कृष्णा विस्तार में इस अध्याय में हमें बताएंगे। वेरी वेरी डिटेल्डली कृष्णा विल talk about these things to us. So Krishna explains the field of activities as the body. तो इस देह को वो कार्य का कचेरी बताते हैं। So by which the soul engages within his allotted sphere. तो जिसके माध्यम से आत्मा कार्य करता है। हमारा आत्मा कैसे कार्य कर रहा है, कैसे हम सेवा कर रहे हैं, कैसे मैं बात कर रहा हूँ, कैसे आप सुन रहे हैं, इंद्रियों से, इस देह से हम, तो देह के माध्यम से हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। So the soul engages within the allotted sphere of activities within the material world. तो भौतिक जगत में उनके इंद्रियों के जो लिमिटेशंस है उसको लेके और इंद्रियों के सहारा लेके वो ज्ञान पाता है और उससे वो और कार्य करता है और भक्ति के और वो बढ़ता है। So Krishna as super soul is the knower of all fields of activity of all living entities. मेरे देह के बारे में मैं जानता हूँ। You will not know what is happening in my body. I will not know what is happening in your body. But Krishna knows what is happening in my body, what is happening in your body, what is happening in every living entity's body. So Krishna is therefore Parama Purusha. We are Purusha. We are the enjoyers of this body. But Krishna is Parama Purusha. In a way, we are also Prakriti.
because we are finally being enjoyed. कृष्णा इज द एंजॉय, तो हम प्रकृति भी है और एक तरह से हम पुरुष भी है, लेकिन वी आर द पुरुष ऑफ दिस बॉडी. वी कैन ओनली नो डिक्टेट टर्म्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दिस बॉडी. तो आपका योर पेन सफरिंग्स जॉयस यू नो, माई पेन सफरिंग जॉय आई नो. आई कैन एम्पथाइज, आई कैन सिंपथाइज with your pain, but I will not be really able to feel your pain. So only you can feel your pain. But Krishna knows what is happening in each and every body. So he is the knower of all the fields of activity, whereas I am the knower of my field of activity, which is my body. So in this section, pehle section mein, I also already told, Krishna talks about question number 3, 4, 5. Then in the second section, he elaborates on question number 5, answers. In the third section, he elaborates on answer for question number 6. Then Arjuna asks, अर्जुन के छठे प्रश्न का उत्तर देते हैं. फिर चौथे सेक्शन में पहले और दूसरा क्वेश्चन का समाधान देते हैं. तो पहले जो सेक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जो हम कल से प्रारंभ करेंगे, अगले मतलब मंडे से प्रारंभ करेंगे. So what is the practical application of the first section? Understanding reality means knowing matter, knowing spirit soul, and knowing the supreme lord in proper perspective. तो अगर मुझे सत्य जानना है, if I want to know the truth, if I want to know the actual things that are going on in this material world at this point in my life, then I must know 3 things. What are the 3 things? I must know what is matter. I must know what is spirit soul. आत्मा क्या है, भौतिक वस्तु क्या है, जानना चाहिए. फिर भगवान कौन है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए. और ये सारा ज्ञान इस अध्याय में कृष्णा हमें एक्सप्लेन करने वाले. So finally we must understand that what is the first instruction that Krishna gives us in the second chapter. We come to know that we are not this body. तो पहला instruction है, तो the first and foremost instruction he gives, he brings about the aspect of you are not this body. We are not this body. हम इस देह नहीं है. We have this body. We are the owners of this body. इस देह का हम तत्काल मालिक हैं. कौन मालिक है? जो आत्मा, दैट इज आवर रियल सेल्फ. आत्मा इस देह का मालिक है, देही. So that is the owner of the body. At least temporarily, it has been given to me. Although everything belongs to Krishna, all the elements of my body, they belong to the material nature. They don't actually belong to me. The material nature is owned by Krishna. भौतिक जगत का जो मेरे अंदर जो भी है वो भौतिक जगत से आया है, प्रकृति से आया है. और प्रकृति का मालिक कौन है? प्रकृति का महेश्वर कौन है? कृष्ण भगवान. So everything belongs to Krishna. But I have been given this body as my allotment through which I can try to enjoy. I have been trying to enjoy independent of Krishna with the help of body, but it has been a frustrating experience. तो योनि पे योनि हमने बदलना, तो कीट योनि से, पौधे की योनि से, प्राणी की योनि से, पंछी की योनि से, फिर लोअर स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की योनि से, फिर इस मानव जन्म तक हम पहुंच चुके हैं. और इस मानव जन्म में हमें एक अवकाश मिला है. दिस what is the opportunity we have got to know who we are, why we are here, who is God, what is our real position in relation to God, where we belong to, do we really belong to this world, do we have another place where we actually belong to. All this is being elaborately told by Krishna in Bhagavad Gita. So finally we have to count ourselves out of material existence. हमें इस भौतिक दुनिया से अलग होके सोचना है. Although we are a part of the material world, but we are not a permanent part of the material world.
It's like we have gone on a holiday to some country. So currently at that point of time we are a part of that country because we are staying in that country. क्योंकि हम उस देश में टूरिस्ट बन के जा चुके हैं, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये वहां जाके यूएसए में जाके हम नहीं बोल सकते आई एम ए इंडियन, मैं भारतीय हूँ तो मैं लेफ्ट साइड से ही रोड में जाऊंगा, आई विल ड्राइव ऑन द लेफ्ट, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे because the concept there is to drive on the right. So you have to follow that rules as long as you're staying in that country. So as long as we are staying in this material world, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, इस भौतिक जगत का नियमों को हमें रेस्पेक्ट देते हुए गुरु के मार्गदर्शन से इसी भौतिक गुणों को, भौतिक गतिविधियों को आधार बना के हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। We can utilize the material facilities, the material things that are there in your life. We can Krishnaize it, spiritualize it, and dovetail it in the service of Krishna. So we must count ourselves out of this material existence because our real existence is spiritual existence. हम क्या है? हम आत्मा है, हम इस भौतिक जगत के है ही नहीं। तो what does Gita do? तो भगवत गीता अध्ययन क्यों करना चाहिए? So why this Jnana Yoga is required? If you see, look at it like that, entire Bhagavad Gita is also Jnana Yoga. That is transcendental knowledge. So Gita encourages visionary obedience, not blind obedience. तो गीता पढ़ने से क्या होगा? तो हम ज्ञान चक्षु से गुरु का आदेश को देखेंगे, ज्ञान चक्षु से भगवान की आदेश को समझ पाएंगे, ज्ञान चक्षु से इस भौतिक जगत को देख सकेंगे, ज्ञान चक्षु से भौतिक गतिविधियों को समझ सकेंगे। And when we put our vision with the vision of transcendental knowledge, then we will learn visionary obedience. तो तब हमारा जो सरेंडर है to Guru and Krishna will become paripurna. It becomes, what we can say, thick, because with good understanding we are surrendering to Krishna and Guru. So it becomes very deep. तो बहुत ही डेप्थ में हम शरणागति ले सकते हैं। तो हालांकि गुरु के समक्ष हम ब्लाइंड ओबीडियंस भी कर सकते हैं। ब्लाइंड ओबीडियंस करने से क्या होता है? अंधा विश्वास करने से क्या होता है? If we are not convinced, if somebody puts a doubt in us, then if we are not spiritually strong, then we will also start harboring those doubts, and then we start thinking, हाँ उन्होंने जो बोला सही है। किसी ने बोला मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवान हर जगह है, फिर हम भी सोचने लगेंगे ठीक ही तो बोल रहा है, अगर भगवान हर जगह है तो मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु बोल रहे मंदिर जाइए, भगवान बोल रहे मंदिर जाइए, आपके प्रीचर्स सारे भक्त बोलते हैं मंदिर आइए। So if you have to understand properly why we have to go to the temple, then we must have the knowledge. So Prabhupada always said, please read my books, because it will be very unfortunate if doubts are put in us by atheists or doubters. So if they ask us questions and if you are not able to answer, then it is harmful for us. When we are also doing harm for the other person. कैसे? वो अगर नास्तिक है तो उसको नास्तिक रहने पे हम मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि convincing answers we are not able to give him. So Prabhupada is telling it is your duty to know. And when doubts like this people ask or put forth, you must be able to crack those doubts. You must be able to explain to them on why you should come to temple. That is a great service we'll be doing for them. So the greatest service we can do to anybody is to bring him to Krishna consciousness. So you should all get into the preaching mode. You should all become preachers. So what is the best way of you becoming preacher? You can talk little and connect them to your preacher. So that's the best way for you to preach. So and धीरे धीरे आपको भी ज्ञान, you should gain knowledge under the guidance of your preachers, gurus, books, and भगवान का भगवद गीता के माध्यम से फिर हम
इस ज्ञान से we should be able to crack and break down all the doubts and all the brick bats that atheists throw at us. So Gita must be studied. क्यों पढ़ना चाहिए? For transformational spirituality. क्योंकि गीता पढ़ने से एक बदलाव आएगा हमारे अंदर, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारा दृष्टि ही बदल जाएगा, और हमारा जो जर्नी है that becomes enlightened. It becomes not a journey in darkness. ऐसा नहीं है कि I am groping in the dark. So every step I keep, I am confidently keeping it, knowing very well that with each step I'm moving towards Krishna. So studying of Gita should not be a material technicality. I know all 700 shlokas by heart. I know. I can tell any shloka. I know the meanings of all the words. That is not the main activity. Halaki, you should know. If not by heart, by the heart. हृदयपूर्वक आपको भगवत गीता का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, भले ही आपके कंठस्थ भगवत गीता श्लोक आपको पता नहीं हो, लेकिन within the heart you must accept Bhagavad Gita as the core knowledge for you to attain Krishna Prema. So this is the reason why we have to study Bhagavad Gita. So Adi Shankaracharya ji has very beautifully told, Gita Shastram idam punyam ya pate prayatapuman Vishnu padam avapnoti bhaya shokadi varjitaha. So what happens when we read Bhagavad Gita? So generally, going beyond 13th chapter, what happens when we read Gita Shastram idam punyam? So one who with regulated mind, ya pate prayata puman. So ya pate prayata with devoted mind. When somebody studies, a human being studies, he recites with devotion this Bhagavad Gita. So this scripture, which is the bestower of all virtue, Gita Shastram idam punyam. Ya pate prayata puman. So kya hoga? He will attain to a holy abode such as Vaikunta. Vishnu padam avapnoti. तो गीता ज्ञान पाने से और उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारने से क्या होगा? विष्णु पदम अवाप्नोति. We will gain the lotus feet of Vishnu, Krishna. We will gain Vaikuntha Loka. We will become residents of Vaikuntha Loka. So Vaikuntha is the residence of Lord Vishnu. Krishna Loka is the residence of Krishna. So and what is there in this Vaikuntha? It is always free from mundane qualities based on fear and lamentation. Bhaya, shoka आदि वर्जिता. तो वैकुंठा में भय और शोक नहीं होता है. So that's why उसको बोलते हैं विगत कुंठा वैकुंठा, जहाँ पे कोई कुंठ नहीं है. दो तरह का कुंठ है, मेनली भय शोक, fear of losing something and shoka of having lost something. If you see in material world, lamentation is for what? For having lost something, and this hankering is for wanting something. So these are the only two things that keep us attached to this material world. So when we study Bhagavad Gita through the via medium and guidance of Guru and Sadhus and Lord Himself, then Bhaya Shoka Adi Varjitaha. We will overcome fears of this material world, the distress of this material world. Vishnu Padam Avapnoti will surely attain the lotus feet of Vishnu, Krishna. How? Ya Patet Prayatapuman. With all heart, when I study Bhagavad Gita and accept it, and Gita Shastram idam punyam. This virtue, this great thing will happen in my life. So further, I think I have some more time. I will try to cover in Shankaracharya ji, Adi Shankaracharya ji, although he was a Mayavadi, towards the end of his life, he did reveal that yes, Krishna is the Supreme Lord. So वे बोलते हैं आदि शंकराचार्य जी, गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च.
नैव संति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च. Very great statement is being made here. If one reads Bhagavad Gita very sincerely, Gita Adhyayana Shilasya. Shila means purely, very sincerely, with all seriousness. Then by the grace of the Lord, the pranayama parasyacha, the reactions of his past misdeeds, naiva santihi papani purva janma krutani cha, what he committed so far in his past lives, it will not act upon him. Naiva santi. So, naiva santihi papani. This papani purva janma krutani cha, which was acquired by his activities of his previous lives, which he acquired this papa, the sinful activities, the sinful karmas, just by Gita Dhyayana Shilasya, by studying Bhagavad Gita very sincerely, with all seriousness, Naiva Santi. So, with the grace of the Lord, Parasyata, his misdeeds, reactions to his misdeeds will not act upon him. So, शंकराचार्य जी आगे बताते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम samsara malanasham. So, what is the meaning of this particular shloka that Adi Shankaracharya ji has said? Maline mochanam pumsa. So, one may cleanse himself daily by taking bath in water. Jalasnanam dine dine. Every day we are taking bath. Why? Because the body is getting dirty. So, I'm brushing my tooth, washing my mouth, and taking a bath. Because the dirt of my body is going to be eradicated. Jalasnanam dine dine. Every day I'm taking bath with water. By that, what happens? Maline mochanam pumsa. Then the dirt that has been accumulated by the body is overcome. But Sakrit Gita Amrita Snanam. Sakrit. जल स्नान दिने दिने करना चाहिए, लेकिन सकृत केवल एक बार. गीता अमृत स्नानम, एक बार गीता में डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? संसार मल नाशनम. इस भौतिक जगत का जो कलमश है, it will altogether be vanquished. For him, the dirt of material life is altogether vanquished. So this is what the study of Gita does in our life. So Gita su Gita kartavya kim anye shastra vistarai ya swayam padmanabhasya mukha padmadinishritah. So in his fourth shloka, Adi Shankaracharya ji is telling, because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Lord. कौन बोल रहा है? Krishna Mukha Vinishritha. So it is coming out of the lotus mouth of Krishna himself. Yes, Swayam Padmanabhasya Mukha Padma Vinishritha. So the nectar of Bhagavad Gita is coming from the lotus mouth of Krishna. So one need not read any other Vedic literature. So this one book, Bhagavad Gita, is enough because it is the essence of all Vedic scriptures, and especially because it is spoken by the Supreme Person of God, Lord. Gita, Sugita, Kartavya, Kimanyai, Shastra, Vistare. No need to read any other literature. So, thank you very much for joining me today for this overview of Bhagavad Gita of chapter 13, and also managed to do some